Good morning students. Today we will discuss the topic slope of budget line and shift in budget line. Okay. Then shifts in budget line. So firstly, slope of budget line as we have discussed. So firstly, what is budget line? Budget line showing the income of the consumer and price of good X and Y, as we have discussed in the indifference curve that consumer how to spend his income on two goods. Okay. So we have given price and income of the consumer. Here we will take good X and here we take good Y. On O axis we have taken good X, on OY axis good Y. Okay. So this is our budget line. AB is our budget line. Okay. So what is the slope of this budget line? Mainly slope of the budget line is Px upon Py. Price of good X and price of good Y. Okay. By equation it is denoted like this, and it tells us that it slopes downward. Okay, slope of the budget line is downward. So why it is downward? Slope of the budget line is downward. Why? Because to consume more unit of good X, consumer have to sacrifice the units of good Y. As income of the consumer is given, so he have to sacrifice, means income is given, that is limited. जो कंज्यूमर की इनकम है वो लिमिटेड है, गिवन है. जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो भी हमें गिवन है. मीन्स कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज 60. ओके, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज 60 रुपीज एंड प्राइस ऑफ गुड 1 इज रुपीज 2 एंड प्राइस ऑफ गुड 2 is 1 rupees per unit. So there can be different combination that a consumer can purchase given the price of the goods and income of the consumer. Okay, to purchase the more unit of good X, consumer have to sacrifice the unit of good Y. Okay, that's why it slope downward. Why? You can see here consumer is consuming, for example, earlier this combination A. Okay, now we want to increase the quantity of good X, so we have to sacrifice the quantity of good Y. He is sacrificing the quantity of good Y. It means to consume more unit of X, he is sacrificing Y unit. Okay, so that's why the slope of the budget line is downward sloping. Okay, so this is about the slope of the budget line. Now we will talk about the shifts in budget line. Okay, shifts मतलब budget line है, क्या हम उसको shift कर सकते हैं? Like this is our budget line. On O axis we will take good X. On OY axis we will take good Y. Okay. So this is our budget line. Firstly, AB is our budget line. So can it be shifted? क्या इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं? बजट लाइन को शिफ्ट किया जा सकता है. सो ऑफ कोर्स बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड. सो किस सिचुएशन में ये शिफ्ट होगी, दैट वी विल डिस्कस. ओके, सो अर्लियर एज वी अज्यूम इन बजट लाइन दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर वी हैव गिवन, प्राइस ऑफ द गुड्स वी आर गिवन. ओके, नाउ सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, then what will happen? Income of the consumer increase, it means the consumer can buy more units of both the quantity. Okay, so the AB will shift like this, it will become A1 B1. Okay, so forward shift in budget line when income of the consumer increase. Okay, so budget line shift forward when income of the consumer increase. Okay, and what will happen if income of the consumer decrease?
decrease, then what will happen? Obviously, means earlier we have assumed the income of the consumer is 60, it increase become 80, so the budget line shift forward. Okay, now we are talking that income of the consumer decrease, it means he can purchase less quantity of good X and Y. Okay, so the AB line will shift backward. Okay, it will become A2 B2. Okay, so this shows when income of the consumer decrease. Okay, what happened when income of the consumer decrease, then budget line shift backward. Okay, you can see it become A2 B2 from AB. Okay, so now the consumer can purchase less unit of both the goods, so it shift backward. Okay, now we will talk about the price. What will happen when price of good X and Y change? So now we will talk that when price of the goods change and income of the consumer remain constant. In earlier we talked income of the consumer is changing but price of the goods remain constant. Okay, here we will assume that price of good X, price of good X and good Y change and income of the consumer remain constant. So income remain constant. Okay, remain constant. So what will happen? This is our O axis. We will take good X and here we will take good Y on OY axis. Okay, so this AB is our budget line. AB is our budget line. Now what will happen if price of good X fall? Yes, so what will happen if price of good X fall? Means earlier it was 2 rupees, now it is 1 rupees. पहले good X का प्राइस जो था वो 2 रुपये था, अभी 1 रुपया हो गया है. सो क्या इफेक्ट पड़ेगा बजट पे हमारे? ऑब्वियसली जब गुड्स का प्राइस कम होएगा तो जितनी हमारी इनकम है उसी में हम क्या है ज़्यादा गुड्स को परचेज कर सकते हैं. ओके, सो price of good X fall, it means the consumer can purchase more quantity of good X. So it will rotate like this. Okay, it will rotate like this. It will rotate towards forward side. Okay, as price of X fall. Now what will happen if price of X increase? Then what will happen? If price of X increase, then consumer can purchase less unit of good X. So it will rotate inward side. Okay, अंदर की साइड रोटेट हो जाएगी जो हमारी बजट लाइन है. क्यों? क्योंकि जो X का प्राइस है दैट इंक्रीज, X गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया है. इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो अब कम क्वांटिटी को परचेज कर पाएगा. कम क्वांटिटी को परचेज करेगा तो इट मीन्स जो हमारी बजट लाइन है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी. ओके, और जब उसका प्राइस इंक्रीज हुआ था देन इट रोटेट टुवर्ड फॉरवर्ड. तब जब प्राइस इंक्रीज फॉल होता है तो क्या होता है, मोर क्वांटिटी परचेज कर सकता है. तो जो हमारा बजट है वो उसी बजट में हम ज़्यादा गुड्स ले पाएंगे. तो ये ए से ए बी से ए B1 बन गई थी. अब जब प्राइस इंक्रीज हुआ, ओके, इनवर्ड रोटेट व्हेन प्राइस ऑफ X इंक्रीज. ठीक है, तो ए B1 ए B2 बन गई. ओके, अंदर की तरफ रोटेट होगी. Now we will talk about price of good Y. What will happen when price of good Y increase or decrease? So on O axis we will take good X, on OY axis we will take good Y. Okay, so this AB is our budget line.
Now what will happen if price of good Y fall? Earlier we talked about good X. Now price of good Y fall. It means the consumer now can purchase more units of good Y. So it will rotate like this. Okay, ये हमारी AB से A1B बन जाएगी. ओके, क्योंकि नाउ जो कंज्यूमर है वो Y यूनिट्स के ज़्यादा गुड्स को परचेज कर सकता है क्योंकि जो Y का प्राइस है वो फॉल हो चुका है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ प्राइस ऑफ Y इंक्रीज? इट मीन्स in the same budget now consumer can purchase less unit of good Y, so it will rotate inward side. Okay, अब जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो जो कंज्यूमर है वो लेस यूनिट परचेज कर पाएगा गुड वाई की. सो हमारी बजट लाइन है वो रोटेट हो जाएगी अंदर की साइड. ओके, सो दिस इज अबाउट रोटेट इन बजट लाइन कि जब प्राइस एक बार हमने फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया कि जो इनकम है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो जो कंज्यूमर है वो दोनों गुड्स को ज़्यादा परचेज कर पाता है. इट मीन जो हमारी बजट लाइन है वो पूरी शिफ्ट हो जाती है, रोटेट नहीं होती है. But when price of good X and Y fall or increase and the income of the consumer remain constant, then we talk about rotation. Then it rotate. When income of Y fall, then it rotate forward side. Okay? And when income of X increase, then it rotate inward side. Means जब increase होएगा price तो अंदर की साइड रोटेट हो जाएगी और जब प्राइस फॉल होता है तो बाहर की साइड, क्योंकि प्राइस फॉल होने का मतलब है कंज्यूमर कैन बाय मोर यूनिट्स ऑफ दैट गुड. ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट द रोटेशन एंड शिफ्ट इन बजट लाइन. वॉच द वीडियो एंड ऑल्सो practice the diagram in your notebook. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.